नमस्कार आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण दिन में और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं दियासा इस सेरेमनी की होस्ट। मैं अपनी को होस्ट मीना के साथ वे सरकारी स्कूल की तरफ से आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्रीजा को सरकारी स्कूल के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। Namaste. Sarkari School is an initiative by We Foundation for all who are of the lower strata or are the downtrodden of the Indian society. It is an initiative to help the children to bring forth and get equal opportunities of education, creative writing, problem solving, and all the morals, well-being, and literature that the Indian culture can provide. This initiative is made by multiple projects like Project Kahaanikosh, Project Kahaanikhoj, Project Sahyog, Project Ayog. And this initiative is one of the initiatives that stands beyond government, beyond corporate organizations to help the people, for the people, by being just human. थैंक यू श्रीजा, थैंक यू। हम यहाँ आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है? छब्बीस जनवरी। हाँ जी, हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम उन गोल्डन हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं टू फील प्राउड एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं इस इवेंट के लिए जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट कहानी खोज और कहानी खोज गणतंत्र दिवस मनाना चाह रहे हैं। मैं स्मीना को बुलाना चाहूंगी प्रोजेक्ट कहानी खोज और प्रोजेक्ट कहानी खोज के बारे में आपको अवगत कराने के लिए। थैंक यू दियासा। नमस्ते सभी को, मेरा नाम स्मीना है। तो चलिए अब जानते हैं हमारे प्रोजेक्ट कहानी कोश और कहानी खोज के बारे में। This two project aims to develop contemporary Indian literature in children through stories. Nowadays, we are currently working on creating a network of government school teachers while ensuring feedback-based communication between terms and schools to assess the effectiveness of learning plans and working on diversification. Through this initiative of ours, we wish to engender an environment that facilitates learning without any fear of judgment and equip teachers with skills needed to teach trendy children. Thank you so much. थैंक यू सो मच स्मीना, थैंक यू। मुझे इस मूवमेंट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक लाइन याद आती है। उन्होंने कहा था एवरी इंडियन should not forget that every Indian should forget that he is Rajput or Sikh, Jat. He must only remember that he is an Indian. अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि इस टाइम पे हर भारतीय को ये भूल जाना चाहिए कि वो किस जात पात से है, क्या वो सिख है, जाट है या वो राजपूत ही क्यों ना हो। हमें इस मूवमेंट पर ये याद रखना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए आज के रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए और उसके बारे में कुछ जानने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सोमिका को। सोमिका, स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you, Smeena. Hello, I wish you to all a very Republic Day. I am Somika. Today I am telling you about why Republic Day we celebrate. Is history, sign of our constitution, and very important things. The Republic Day of India is a national holiday of India to mark the adoption of the Constitution of India and transition of India from a British dominant to a republic on January 26, 1950. देश में संविधान के स्थापना दिवस के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 जनवरी 1950 को ही देश का संविधान लागू हुआ था।
इस दिन भारत में भारत सरकार अधिनियम को निरस्त कर नए संविधान लागू करते हुए नए संविधान को पारित कर दिया गया था। उसी के बाद से हर साल 26 जनवरी के दिन को राष्ट्र पर्व के तौर पे मनाया जाता है। सबसे पहले 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भारत को पूर्व गणराज्य के दर्जे दिलाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिससे अंग्रेजों ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत को पूर्ण गणराज्य की घोषणा कर दी गई थी। भारत को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्र गणराज्य बनना और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान अपनाया था, जिससे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को सभापति को सौंप दिया, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। हमारा देश संविधान के मुताबिक ही चलता है। One of the main function of the Republic Day Parade is to pay tribute to the martyrs who have sacrificed their lives for the country and to confer bravery awards on military persons, citizens and children for showing courage in face of dignity. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Somika. Thank you. And sorry for the background noise. सोमिका की बातों को सुनकर मुझे एक चीज ध्यान आती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ था और ये भारत का ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो हाथों द्वारा लिखा गया था। और तो और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, ये देश है महापुरुषों का, ये देश है महापुरुषों का, गुणवान विद्वानों का, और ये देश है साधक संतों का, ये देश है साधक संतों का, ये देश है वीर बलवानों का। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी निष्ठा आर्य को इसी क्रम में। कहानी खोज और कहानी कोश के द्वारा गणतंत्र दिवस को मनाए जाने कहानी खोज और कहानी कोश के द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी के इस प्रयास का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं निष्ठा आर्या आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक कविता के साथ। कहा जाता है कि जो नारे होते हैं वो नारे शब्द मात्र नहीं होते, वह नारे प्रतीक होते हैं, हमारी राष्ट्रीयता का, हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक होते हैं। आइए उन्हीं नारों के ऊपर, वंदे मातरम हमारा एक नारा है, वंदे मातरम के ऊपर ही मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वंदे मातरम मात्र एक शब्द नहीं है, इसके अंदर एक इतिहास छिपा हुआ है। आइए उस इतिहास से मैं आप सभी को अवगत करवाती हूँ। यह वंदे मातरम शब्द नहीं, ये भारत माँ की पूजा है, माँ के माथे की बिंदिया है, श्रृंगार न कोई दूजा है। इसमें तलवार चमकती है मर्दानी रानी झांसी की, इसमें बलिदान मचलता है, दिखती है गांठें फांसी की। शिवराज वीर की सांसें हैं, यह लोह पुरुष का रक्त श्वेत, यह गंगाधर की गीता है, चित्तू पांडे सा जीता है।
यह 4 दिनों के जीवन में चिर सत्य सनातन यौवन है। यह बलिदानों की परंपरा 1857 है। लेकिन कुछ राष्ट्रद्रोहियों ने है इसका भी अपमान किया। इस राष्ट्र मंत्र को इन लोगों ने संप्रदाय का नाम दिया। लेकिन जब यह घट फूटेगा, जब गोप बवंडर छूटेगा, तब प्रलय नटी उठ नाचेगी, भारत की जनता जागेगी। तब यदि देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू निष्ठा, आपने हमारे अंदर जोश जगा दिया है। बहुत अच्छी पोएम बोली है आपने। तो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी, हाउ इज द जोश एवरीवन? हाउ इज द जोश? Hi, sir. Hi. Very high. वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू निष्ठा। इसी के साथ मैं आप अब स्नेहा को बुलाना चाहूंगी, जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है उनके बारे में बोलेंगी। स्नेहा प्लीज। थैंक यू स्मीना। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि शांति निकेतन के एक आर्टिस्ट जिनका नाम नंदुलाल बोसु था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हर पन्ने को उन्होंने डिजाइन किया था। कैसे पता है आप सबको? मैं बताती हूँ। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पेजेस पर उनके काफी अजंता केव्स के 5 सेंचुरी के मूरल्स के ऊपर उन्होंने डिजाइन बनाए थे। उसके साथ साथ उन्होंने मूरल्स, बॉर्डर्स, मोटिव्स हर पन्नों पे उन्होंने अपनी सारी कलाकारी दिखाई थी। जहां भी वो गए थे वो हर पॉपुलर फॉर्म्स को उन्होंने क्लोजली अटेंशन दिया, जैसे कि अर्बन, रूरल, हिंदू, मुस्लिम, वुड ब्लॉक प्रिंट, पाम पेंटिंग्स, एम्पिरल डिजाइन, हर चीज पर उन्होंने अपनी बारीकी दिखाई थी और उनके हर सारे कामों पर ये सारी सुंदरताएं उन्हें दिखाई थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हर पन्नों पर। He went to China and Japan also, ink and brush painting के बारे में सीखने के लिए, and in some of his earlier works also we can see the influence. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू हमें ऐसी चीज बताने के लिए जो छुपी हुई थी या हमें नहीं बताती। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम ये गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हम भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। हमें भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। हमारा हमारा एक सेकंड, हमारा भारत, हमारा देश, हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी महिमा को, जो आपको बताएंगी कि राइट टू एजुकेशन, अमेंडमेंट, संविधान, इन सब का क्या रिलेशन है आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। Thank you, Diyasa. Good afternoon, everyone. I am Mahima. Mahatma Gandhi once said, "What really needed to make democracy function is not knowledge of facts, but right education." On 4th August 2009, Government of India introduced Right to Education Act, that is Article 21A of Indian Constitution, which ensures that all children should receive quality elementary education irrespective of their economic or caste background. But the history of RTE is not as simple as it seems to be. The idea of RTE, or the fact that all children should receive quality education, was first introduced in 1950. India made a constitutional commitment that all children should receive quality education, free and compulsory education, but this idea was rejected by the higher authorities due to lack of funds. In December 2002, 86th Amendment Act seeks to make free and compulsory education a fundamental right for all children in the age group of 6 to 14 years of age.
Free and Compulsory Education for Children Bill was made in October 2003 and posted on the website inviting suggestions from the public. In the year 2004, large suggestions were received in the favor of the bill. The bill was then sent to the Prime Minister of India for his observation in 2005. But the bill was again rejected in 2006 by the Finance Committee of India because of the same reason, that is, lack of funds. In the year 2009, the bill was passed from both the houses of parliament. And finally, in 2010, after 60 long years, RTE came into effect. Now, I would like to share a story of the teacher who truly believes that all children should receive quality education, Sri Sujit Chattopadhyay, popularly known as Master Musai, of Osgram, a small village in West Bengal. He was the first person of his village to get a postgraduate degree. He declined high salary jobs because he wanted to teach those children who were deprived from quality education. He accepted a job with mere salary. And after his retirement, he started teaching tribal kids with just rupee 1 per year as fees. In an interview, he said that he wants to teach till his last breath. He received Padma Shri Award in the year 2021. People like him is an inspiration for all of us. Thank you. Happy Republic Day. Thank you, Mahima. You have told us a very interesting point and the amendments of it. Thank you so much. आप सभी को पता है गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण का मतलब समूह और तंत्र का मतलब बांध के रहना। इसका मतलब ये जब देश मुसीबत में हो या फिर अच्छाई कर रहा हो तब हमें एक साथ रहना चाहिए। इसी वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज के इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट चाइल्ड लॉज के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी चाहत को। चाहत, स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you, SMEENA. So, hello everyone, my name is Chahat, and today I'm going to talk on the topic importance of significance for children. So, historically, we have witnessed a sea change in laws, policies, and the recording of human rights and children rights. We have moved from common law dictaries, which unfortunately favored the powerful, to a right based approach. Whatever welfare happened to communities, including their children, depending on the document section of society and mercy. The Constitution of India, which come into effect on 26 January 1950, guarantees children rights. The list of children laws are: first, Children Pledging of Labor Act 1933. This act prohibits the pledging of the labor of children. The Immoral Traffic Act 1987. This act seeks to stop trafficking in young persons, both boys and girls. Child Labor Act 1968. The act prohibits children engagement in certain kinds of employment and regulates the condition of work of children in the other employment. Fourth, Children Prohibition of Children Marriage Act 2006. This act follows the basic premises to make a child go through marriage in offense, and child or minor is a person up to 21 year in the case of both girls and boys. And the last one, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. Right to education was only the provision in the directive principle of state policy, which has a period of 10 years within the state that to fulfill the mandate to provide free and compulsory education. We can have the right to education under the fundamental right, making it a right under Article 21A.
The Right to Education Act 2009, also known as RTE Act, describes moderates of the importance of free compulsory education for children aged between 6 to 14 years in India. Thank you, and happy Republic Day to all of you. Thank you, Chahat. Thank you for telling us about all the articles and the related information. मैं अब आपको ये बताना चाहूंगी कि शहीदों का जब सपना सच हुआ, हमारे भारतीय शहीदों का जब सपना सच हुआ, तभी हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन शहीदों को, उन वीरों को। आओ हम सब सलाम करें उन शहीदों को, उन वीरों को, जिनकी वजह से हमारा भारत गणतंत्र हुआ। मैं इसी के साथ रिदम को बुलाना चाहूंगी पेश करने के लिए कुछ लैंडमार्क अवार्ड्स जो बच्चों को मिले हुए हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं रिदम मेहरा हूँ और मैं कहानी खोज और कहानी कोश प्रोजेक्ट की एक बहुत ही एक प्राउड मेंबर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कुछ 25 बच्चों को, भारतीय बच्चों को दिया जाता है जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इनको अवार्ड दिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्रेवरी अवार्ड अपने आप को ब्रेव दिखाते हैं। सो आई वुड स्टार्ट रीडिंग। The National Bravery Awards, also known as the Rashtriya Bal Puraskar, are a set of awards given annually to about 25 children below 16 years of age for unique acts of bravery against all odds. The awards are given by the Government of India or the Indian Child Council Welfare. The award are constituted in 1957. The National Bravery Award consists of 5 categories, which are Bharat Award, the Geeta Chopra Award, the Sanjay Chopra Award, the Gopu Gyadhani Award, and the General National Bravery Award. The awards are usually announced on 14 November, Children's Day, or in January the following year. The later are presented by the Prime Minister on the eve of Republic Day. Before this, the Prime Minister hosts a reception in their honor where the children meet the media. On 26 January, awardees take part in the Republic Day parade at Rajpath, New Delhi. Some honorable mention of last year winners are a 16-year child-old girl from Bihar, Jyoti Kumari, became famous for showing exemplary form of courage by covering a distance of 1,200 kilometers along with her ailing father on a bicycle to help him reach the hospital. During the COVID-19 lockdown, she transferred the Sikandarpur in Haryana to Darbhanga in Bihar to help her father reach her home. She was also offered to participate in the trials conducted by the Cycling Federation of India. Jyoti was awarded by the Pradhan Mantri Bal Puraskar in 2021 for her excellence in the field of bravery. Then our second candidate is this 14-year-old Kameshwar Jagannath Wagmari from Nanded, Maharashtra. Risked his own life to save 2 boys from drowning Mani River. He was awarded with the Pradhan Mantri Bal Puraskar in 2021 for his excellence in the field of bravery. The third candidate is a 15-year-old Divyan Singh from Barbanki, Uttar Pradesh. Saved his sister and 7 children from a raging bull attack without fearing for his life. During the incident, Divyansh even broke his arm. He continued to fight against the bull relentlessly. He was awarded the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar for his excellence in the field of bravery. Also you would like to know that these awards are not only given in the field of bravery but also in the streams like music, dance, fine arts, literature, science, innovation and sports and games, academics, technology and many more streams. The children who excel in these fields. So there are some honorable mention. I would like to read them. Amia Lagru, a 12-year-old girl who was given the award in excelling in the field of dance for performing in over 100 programs in Bharatnatyam and Kuchipudi. Vyu Mahuja, a 9-year-old boy, was given the award for excelling in the field of music. He can play 9 musical instruments, and has performed over 300 programs. Anurag Ramola,
11-year boy was given the award for excelling in the field of art and crafts. His artwork has been given more than 235 awards and honors at national and international level. Saundarya De, he received the award for excelling in the field of literature. He was the author of historical fiction and is a fellow of Royal Asiatic Society in Great Britain and Ireland. Thank you so much and happy Republic Day to all of you. थैंक यू रिदम। आपने हमारे अंदर इस चीज को बोलकर हमारे अंदर उस चीज को जागृत किया है कि हमें हर किसी को मदद करना है, हमें हर एक चीज में एक्सेल प्राप्त करना है। और ब्रेवरी अवार्ड सिर्फ ब्रेव दिखाकर ही नहीं जीता जाता है, वो हम लोगों के अंदर कुछ ह्यूमैनिटी पैदा करने के लिए होता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगी, आप सब दूसरों को मदद कीजिए, अपने अंदर एक्सेल लाइए और ब्रेवरी अवार्ड के लिए अप्लाई कीजिए और जीतिए। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं अब एक स्वीट सी पोएम सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेघा को। मेघा प्लीज, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमन। मैं मेघा अग्रवाल आज आप सभी के सामने महावीर प्रसाद जी की रचित रचना गणतंत्र दिवस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। प्राची से झांक रही उषा कुमकुम केसर का थाल लिए है सजी खड़ी विटपालिया सुरभित सुमनों की माल लिए। गंगा यमुना की लहरों में है स्वागत का संगीत नया, गूंजा विहगों के कंठों में है स्वतंत्रता का गीत नया। पहरी नागराज विहंसता है गौरव से उन्नत भाल लिए, फहराता दिव्य तिरंगा है आदर्श विजय संदेश लिए। गणतंत्र आगमन में सबने मिलकर स्वागत की ठानी है। जड़ चेतन की क्या कहें स्वयं प्रकृति कर रही अगवानी है। कितने कष्टों के बाद हमें स्वतंत्रता का ये हर्ष मिला, कितने कष्टों के बाद हमें स्वतंत्रता का ये हर्ष मिला। सदियों से पिछड़े भारत को अपना खोया उत्कर्ष मिला। धरती अपनी नभ है अपना, धरती अपनी नभ है अपना, अब औरों का अधिकार नहीं, परतंत्र बताकर अपमानित कर सकता अब संसार नहीं। पर आजादी पाने से ही बन गया हमारा काम नहीं। निज कर्तव्यों को भूल अभी ले सकते हम विश्राम नहीं। मानसिक गुलामी के बंधन को कागज और कलम ने तोड़ा था। अपना कानून बनाकर हमने नया पन्ना इतिहास में जोड़ा था। बोलने की ताकत मिली हमको, स्वतंत्र हर इंसान हुआ। हिंदुस्तान में जब लागू स्वदेशी संविधान हुआ, हिंदुस्तान में जब लागू स्वदेशी संविधान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी से चाहती हूँ कि जस्ट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मेका। ऑल ऑफ यू प्लीज जस्ट गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। इतनी मेलोडियस पोयम प्लस उस ऐतिहासिक पीरियड से लेकर अब तक की इन्होंने सारे पॉइंट्स एक छोटी सी पोयम में कवर कर दिए। सीरियसली वेरी वेरी वंडरफुल पोयम। दिस पोयम आई लाइक पर्सनली। मैं जैसे कि हम भारतीय हैं, भारतीय कभी भी किसी से कम नहीं है। इसी श्रेणी में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीजा को कि वो कुछ ऐसे भारतीयों के नाम आपको बताए, आपको उनसे अवगत करवाए जो पद्मा अवार्डीज है। नमस्ते, मैं हूँ श्रीजा सिंह। मैं पद्मश्री अवार्ड्स 2021 और 2022 के अवार्डीज जिन्हें इंडियन एजुकेशन एंड लिटरेचर में पद्मश्री पाया है उनके बारे में बताना चाहूँगी। First, Usha Yadav, Padma Shri for Literature and Education. Mrs. Usha Yadav has written around 100 books in Hindi in various genres across the past 5 decades. Her selected works are also included in multiple textbooks of state boards.
An alumnus of Kanpur University, Mrs. Yadav credits her success to the literary environment of Kanpur. She published her first poem when she was in ninth grade, and she's never looked back. She has been teaching in Bhimrao Ambedkar University and while completing her doctor in literature in Agra. Ram Yatna Shukla, Padma Shri, Sanskrit scholar, author, and teacher. He is the president of Kashi Vidhat Parishad and is popularly called Abhinav Panini for his contribution in inventing new ways of Sanskrit grammar and Vedant teaching and modernization. Nanda Prasthe, Padma Shri in the field of literature and education. At the age of 102, Ms. Nanda Sir continues to provide free education for children and adults in Jajpur, Odisha. He could not study beyond the class of 7th due to economic problems and financial trouble. But his motto was to eradicate this sort of problems for all other children in the future. He has opened an informal school that functions all 7 days of the week, runs from dawn to 9 p.m. in the evening in a makeshift hut in a village. It is open for children and citizens. Upon receiving his award, Mr. Prusthi raised his hands to bless President Ramnath Kovind. This gesture went viral on social media. Shrikant Madhav Dattar, Padma Shri in the field of education. He is the George F. Baker Professor of Administration and Dean of Harvard Business School. Mr. Dattar has several research and courses development interests and has created 2 courses based on problem solving and data analytics in his college. In 2002, Najma Akhtar, who has been given the Padma Shri. She was the first female vice chancellor of the Central University in Delhi. She is also the vice chancellor of University of Kashmir before joining Jamia. She is responsible for creating courses for administrators, educators, and work towards gender equality. P. Narayan Kurupu is a Malayalam scholar, poet, and author from Thiruvananthapuram. He is known for his nationalistic themes and has been conferred the Padma Shri for literature. Pratibha Ray. She is an internationally acclaimed Odia author. She is known as the Queen of Odia literature and has been awarded the Padma Bhushan in literature and education. Badpalin War received the Padma Shri in literature and education. A Khasi scholar and author, she has been promoting Meghalaya's Khasi language globally and very, very successfully. Giridhari Ram Gonju has been awarded the Padma Shri posthumously in literature and education as well. An educationist from Ranchi, he had worked towards the promotion of Nagpuri culture for over 5 decades. Aknon Asghar Ali Bashrat is a Balti poet and author from Kargil who's been working towards the preservation of his language and culture and has been conferred Padma Shri this year. Apart from this, there are 28 members who've been awarded Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri for education and literature in India. Mrs. Pratibha Ray, Swami Satyachandan, Sri Vashisht Tripathi, Professor Najma Akhtar, Mr. T. Senka, Sri Shaibal Gupta, Sri Narsingh Prasad Guru are just few to name who have worked towards education and literature in India to tell that this war is not over. The aim to provide every child education has never stopped, has never been stagnant, and its work has reached rises high up in the sky even if we have not heard of it. So, a very happy Republic Day to remember to be known as what an Indian is. Thank you. धन्यवाद श्रीजा, थैंक यू। आपने हमको उन महान हस्तियों के बारे में बताया जो पद्मश्री जैसे इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित हैं। और तो और अब मैं इस कार्यक्रम को अंत तक लेके जाना चाहती हूँ और आप सभी से एक लाइन कहना चाहती हूँ। कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा, कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस, धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझ जाएगा। इसी के साथ हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड अ ग्रेट जर्नी अहेड। मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप इस आज के इवेंट के समक्ष कुछ 2 लाइन कहिए। आपको कैसा लगा?
आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच।